Okay, fine. So we will be starting with the thermodynamics part, right? Now, basically, do you have any idea about the thermodynamics? Now, what is the thing? कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद है या फिर कभी मतलब कभी इस कॉन्सेप्ट के अक्रॉस आप लोग आए हो क्या राइट नाउ इन द स्कूल और यू कैन से इन 11th 12th समथिंग आप लोग में से 11th 12th किया हुआ है किसी ने या फिर आफ्टर 10th डायरेक्टली So I have done Yes, 12th grade. ओके फाइन सो have you ever heard about this concept? Yes, sir. Okay, so what is the idea? Can you tell me? So Yeah, yes, it basically transfers around heat. yeah, It is about the concept of heat and the transfer of heat. okay, And then there are the principles of thermodynamics, the three principles. yeah, exactly. So it all revolves around that. Like that is the essence. Yeah, yeah, right, exactly. Okay. Now, whenever we are considering the thermal part, okay, so thermal का जो field है that is again a vast. So in that there are so many things are there. जैसे अगर thermal में अगर हम लोग बात करें तो advanced में है. So the refrigeration and air conditioning is there. Okay. Then we were having a subject called as a thermal engineering, right? Heat transfer is there, fluid mechanics is there. There are so many different what I can say so applications are there, and if you see in each and every application you will find these three components: the temperature, the pressure, and the volume. Okay, so if you want to study the effect of this quantities like the effect of the temperature, the effect of the pressure, and the effect of the volume on any of the physical system, okay, so that is nothing but why you want annotation request, guys. mistakes. Yeah. If you have any doubts then you can ask me, yeah? No issue. Okay. So what I was talking, okay. So basically, majorly we will be focusing on these three parameters: the temperature, the pressure, and the volume. Now, what is the meaning of the thermodynamics? Now, it is again a branch. Okay, it is a branch of physics. Now, if I talk about the definition, exact definition, so it will be what? It is a branch of the physics that studies the effect of change in temperature and pressure, volume, okay, on a physical system at the microscopic scale by analyzing the collective motion of their particles using the statistics. Okay, now we'll try to elaborate what is there actually. Now, as we know, obviously it is a branch of the physics, okay, because we are going to study in that. So we are going to study the effect of temperature, the pressure, and the volume. And what is on the physical system? So we are going to study about the system. So what is actually a system? What is the meaning of the system? Okay, what is there inside the system? The simple thing, if I talk about a system, the system is nothing but the area which is under consideration. Okay, so whatever the area under consideration, whatever the changes in the all these quantities, we have to analyze that thing. Okay, now what is this macroscopic structure? Okay, so microscopic structure means what? It will be done on the large scale and not on the means what uh, what I can say माइक्रोस्कोपिक में ऐसा हो जाता है कि लाइक एक सर्टन कंटेंट हम लोग कंसिडर करते हैं विच इज एक्चुअली अ लार्ज कंटेंट. ओके, सो लार्ज स्केल पे हम लोग को उसको देखना है एंड वी आर एनालाइजिंग ऑल द कलेक्टिव मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स मीन्स ऑब्वियसली सिस्टम जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे पार्टिकल ऑब्वियसली वहाँ पे रहेगा, राइट? So we have to analyze that motion by using the thermodynamics. So basically अगर कोई आपको पूछता है कि what is the meaning of thermodynamics, you will say it is the study of the effect of change of temperature, pressure, and the volume. This is the simple thing actually what I can say. Okay. Now thermodynamics, that is actually a uh, अलग अलग word है. So thermo, it is from the Greek. So
ग्रीक में उसका मीनिंग है हीट, and dynamics is nothing but the power. So heat and the power you need to understand. Now if you want to study any of the subject whichever I have already mentioned, so the fluid mechanics is there, okay, then what I can say, the heat transfer is there, refrigeration and air conditioning is there. So whatever the thermal related parts are there, the thermodynamics is the basic thing, okay. If you don't know anything about the thermodynamics, then आगे सीखना लाइक ज़्यादा सेंसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज द कंप्लीट थिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस। एंड मेजरली जो हम लोग बात करते हैं वह एक और सब्जेक्ट को एक्चुअली मैं मेंशन करना भूल गया, दैट इज नथिंग बट योर आईसी इंजन। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज ऑलरेडी यू आर फोकसिंग ऑन दैट ऑटोमोटिव, ओके। सो ऑटोमोटिव में जो भी आईसी इंजन जो भी यूज हो रहा है, सो अगेन whatever the things, whatever the working we are like understanding, or whatever the working we are already studying, so basic is nothing but the thermodynamics. So actually we are going to study in that, okay। So later on stages हम लोग वो सब देखने वाले हैं, so different cycles are there, okay। So कैसे हर एक चीज़ से कैसे वर्किंग होता है, हर एक में टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल दैट थिंग्स वो कैसे वर्क होता है, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके। बट बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के बारे में, तो थर्मोडायनामिक्स के बारे में अगर देखेंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन थ्री थिंग्स, दैट इज थ्री ईज हम लोग उसको बोलते हैं। उसमें से पहला जो है दैट इज नथिंग बट योर एनर्जी, okay। So whatever the energy is there, so thermodynamics is completely dependent on the energy. The second thing is nothing but the enthalpy, and the third thing is nothing but the entropy. So we are going to study all these things. So what is the meaning of energy? What is the meaning of enthalpy? What is the entropy? All this we are going to study. But just remember the thing that the thermodynamics is all about these three E's, that is energy, the enthalpy, and the entropy. Okay. So yes, obviously this during our course actually we will be study the effect of heat and the work transfer on the specified system. Okay, fine. Is there any doubt in the definition? So what is the meaning of thermodynamics and all? Is there any doubt? No, sir. No, sir. Okay, fine. No, sir. So yeah, right. So again, the same thing is there, but in a different manner. So what is the thermodynamics? So some different definition has been there. So thermodynamics is nothing but it is the study of effect of work, heat, and energy on the system. Initially, we have seen that the effect of temperature, the pressure, and the volume. Now it is stating that it is a work, heat, and the energy. Okay, so as I mentioned, energy is much important, so we have to study the effect of these things, okay। And thermodynamics is only concerned with the large scale observations, so जो microscopic macroscopic observation था ना, so that is the this is the thing, so that is large scale observation। तो जब भी हम लोग कोई भी system यहाँ पे consider करेंगे, it should be considered as the large scale, whereas other एक side रहता है that is called as the microscopic करके। तो microscopic में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब एक छोटा एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे विच विल बी हैविंग स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। सो माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम लोग अलग पर्सपेक्टिव में देखने वाले हैं व्हेनेवर वी आर गोइंग टू लर्न द एफईए, दैट इज द फाइनाइट एलिमेंट मेथड। So in that case we are going to learn that approach, so what is the meaning of that microscopic and all that, so that we are going to study in that. But whenever we are considering thermodynamics, obviously we are considering the large scale. Now what are the different things over there, so you can see it over here, the zeroth law is there, okay। So different, it is working on a different law, so there are three laws, the zeroth law, the first law, and the second law, okay। So we will going to study it one by one, what is the zeroth law, what are the different conditions depending on that, then what is the first law, okay, then what is that, what is the second law, okay, and what are the different
what I can say, then depending on that, that there are certain numericals are there, so we will try to study that also. Okay, but if you talk about the basic thing, the zeroth law, it will be related to the equilibrium. Okay, and the first law, it is related to the work, heat and the energy, and the second law, it is related to the entropy. Okay, so in the later stage we will going to study that thing, right? Okay, so what is the important? So as I said, ki there are certain laws, and already we have mentioned that कि thermodynamics में क्या होता है, there are different laws. Okay, so यहाँ पे वही दिया हुआ है कि thermodynamics is the law of the nature and has a different laws to be applied. Okay? मतलब वहाँ पे certain laws हम लोग को applied करना पड़ता है जो already हम लोग ने वहाँ पे देखा है, the zeroth law, the first law and the second law. Okay, now what is the importance of that thing? Okay, the starting point for the most thermodynamic consideration are the laws of the thermodynamics. मतलब जो भी आगे हम लोग जो भी systems देखने वाले हैं, there are different cycles which are operating on that. Okay, so मतलब वो सारे applications है जिसमें you might have heard about the Carnot cycles. Okay, या फिर अपना refrigeration cycles या फिर air conditioning cycles. So there are so many cycles are there. ओके, बट जब भी आप लोग को क्या करना है, वो कोई भी साइकिल जब भी स्टडी करना है, फॉर दैट द स्टार्टिंग पॉइंट इट शुड बी अ थर्मोडायनामिक्स कंसिडरेशन. ओके, सो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू स्टडी ऑल द लॉज, मतलब उसमें से कोई ना कोई तो लॉ हम लोग यूज करने वाले ही है. सो बेसिकली कैसा था पहले, फर्स्ट लॉ हम लोग ज़्यादा मतलब यूज करते थे, but first law में there are certain limitations. So because of that, what we have done, we have come up with the second law, and most of the जितने भी सारे applications हैं आपके, जितने भी जैसे अभी मैंने जो mention किए, different cycles are there. So majorly those cycles, these are working on a second law. Okay, so मतलब कहने की बात यही है कि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को जब स्टडी करना है, at that time we have to use these laws. Okay, so that is an importance of the law. Okay, is there any doubt in this? This is just a basic, just like No, पूरा sir. informative ही है. Okay, जो भी इसका डिटेल पार्ट्स है, so वो पूरा हम लोग डिटेल में देखेंगे, जिससे हम लोग आगे आगे प्रोसीड करते जाएंगे. At that time we will see that thing. Okay. Now we will be focusing on the system. So what is the meaning of the system? Because definition में हम लोग ने बोला है कि we have to study the effect on the system. Okay, so let's try to understand what is the system. Okay, the obviously the most important point in the thermodynamics to define the system. Okay, अगर हम लोग system versus surrounding अगर हम लोग ये करते हैं, लाइक कंपैरिजन करते हैं. ओके, सो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि सिस्टम इज नथिंग बट व्हाट, द area which is under consideration is called as a surrounding. Now here it is given that in thermodynamics the interaction between the large assembles, okay, of object are studied and categorized. Okay, central to this are the concept of the system and the surroundings. Actually there are two consideration we have to do. The first thing is nothing but the system which is under consideration, and the second thing that is nothing but your surrounding which is outside the consideration. Okay, so I'll tell you कि exactly क्या होता है. पहले तो हम लोग जो मैंने ये जनरलाइज डेफिनेशन बोला कि इट इज अंडर कंसिडरेशन, इट इज आउटसाइड द कंसिडरेशन, बट व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द सिस्टम. सो I'll read the definition and then we'll try to elaborate. Now, what is the system? A system is a composed of particles whose average motions can be its average motions define its properties, which in turns are related to one another through equation of the states. Okay. Now, this is the definition of the system. So now, what is the definition is saying? A system, it is composed of different particles, okay, whose average motion define its properties. मतलब जो भी इसका जो भी वहाँ पे particles का motion है, that is defining its all the properties. Okay, so whatever the things are there.
all the properties it will be defined, which in turns are related to one another through the equation of the state. So we have to consider so many equations for that, so that is depending on that, right? So बेसिकली सिस्टम के अंदर क्या रहेगा, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, द सिंपल थिंग, जैसे अगर एक कोई भी मैटर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, so it will be there, it will be having all the what I can say the particles are there, and we have to study their motions, मतलब जो भी पार्टिकल का अंदर का जो मोशन है वो हम लोग को स्टडी करना है, बिकॉज जो भी मोशन वहाँ पे टेक्स प्लेस होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हीट, or what I can say the temperature, the pressure, and the volume. Okay, so that we are going to study in that, right? So in chemical engineering, a system could be a gas or a liquid flowing in a pipe or a tank or a reactor. मतलब एक simple example उन्होंने ऐसा दिया है कि system मतलब क्या है, तो if I talk about a chemical engineering and not a chemical engineering actually, if you talk about any mechanical engineering or automotive engineering, so whatever the engineering part are there, a system could be a gas or a liquid, मतलब कोई भी एक अगर एक पाइप अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है या फिर जो भी गैस फ्लो हो रहा है, सो दैट गैस और लिक्विड इज नथिंग बट योर सिस्टम, ओके, एंड वट एवर द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम हैज नथिंग बट द सराउंडिंग, क्लियर है, एनी डाउट? No, sir. Okay, fine. Then the next thing is nothing but the properties of the system. So what is the meaning of the also already we have studied, already we have seen the definition of the system. So now what is the properties of the system? So any systems can be defined by its pressure. That means what are the different properties? So the pressure is the one of the property. The second thing is nothing but the temperature. The third thing is nothing but the composition, okay, or other more complicated properties like specific entropy and specific enthalpy. These are the two important parameters again. But basically system जब भी हम लोग को define करना है, at that time measure is nothing but your pressure, your temperature, and the composition means what I can say the मिक्सचर वी कैन कंसिडर, या फिर कंपोजिशन में हम लोग सीधा उसका वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, बिकॉज जितना भी हम लोग का जो भी इनक्लोज्ड एरिया है उसके अंदर जितना भी मैटर है, okay, so that is nothing but your composition. So as we have already earlier we have stated that the same thing is applicable over here. The system is nothing but it can be defined by the pressure, the temperature, or the composition. In addition to that, we will use the different properties like entropy as well as the enthalpy. Okay. Now, okay. Obviously, applications अगर हम लोग बात करते हैं system and the thermodynamics. Now, what is the system that we have already studied? So now, what is the effect or what is the use in the thermodynamics? Okay. So thermodynamics describe how system respond to the change in their surrounding, मतलब जैसे भी surrounding में कुछ भी changes होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा आपके सिस्टम पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा. So that effect will be described by the thermodynamics. So different laws are, as I already stated, so different laws are there, तो उसकी वजह से क्या होता है कि thermodynamics पूरा आपको explain कर पाएगा कि what is the effect on the state from the surrounding, मतलब जैसे surrounding में अगर temperature बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है अपने सिस्टम पे, जैसे सिस्टम का भी टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाएगा, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स में जो भी मॉलिक्यूल्स में जो भी मोशन है तो वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. So okay, so that will be explained by the thermodynamics thing. Okay, then obviously it can be applied to the wide variety of the applications, तो जैसे मैंने बोला कि there are so many different things, so science and engineering में such as what phenomena are there, so the main thing is nothing but the engines, because the completely working of the engines that is completely dependent on the thermodynamics. Then the phase transition, okay, the chemical reactions, then transport phenomena like जो liquids and all that हम लोग flow कर रहे हैं, तो मतलब fluid mechanics is again there. So as I already said, so whatever the applications are there, so in each and every application like heat transfer, the thermal engineering, the fluid mechanics, okay, the refrigeration cycle, air conditioning,
So in each and everything we have to consider the system and the thermodynamics. Okay, and this is the application like chemical industries में हम लोग यूज कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी में यूज कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं. Wherever you want you can use this thing. Is this clear? So, Okay. Now अभी तक हम लोग ने जनरलाइज बात किया था कि व्हाट इज द सिस्टम, सो वी आर स्टेटिंग दैट ओके ऑल द डेफिनेशंस एंड ऑल दैट. अभी थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हम लोग देखते हैं कि सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम. ओके, एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज द सिस्टम. सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक, नाउ दिस इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम. So thermodynamic system is what? It is the part of the universe that is under consideration or the study. So already मैंने ये simplification में already बोला हुआ था कि system मतलब क्या है कि जो भी area है, जो भी part है, okay, part of the universe which is under consideration, okay, or what I can say the study. So that is nothing but the thermodynamic system. Now there is another concept which is called as a surrounding. मतलब सिस्टम को हम लोग ने क्या बोला कि कंसिडरेशन में जो एरिया है दैट इज योर सिस्टम, एंड वॉट एवर द आउटसाइड पार्ट इज दैट इज नथिंग बट द सराउंडिंग. नाउ अभी जो आपका सिस्टम जो भी रहेगा it will be having certain boundaries. Okay, so either it will be real boundary or it will be imaginary boundaries. So what the boundaries actually do, it separates the system and the surrounding. ओके, मतलब जो भी रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग है उससे आपका जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो सेपरेट आउट करता है. ओके, सो दैट्स वाई ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि दिस इज द सिस्टम. ओके, दिस सराउंडिंग मतलब ये जो डॉटेड यहाँ पे दिख रहा है that is nothing but your boundary. Okay, and outside the boundary you will see the surrounding. Okay, now system is nothing but this is the area under the consideration. तो जब भी हम लोग कोई भी thermodynamic study करते हैं या भी कोई भी इफेक्ट एंड ऑल दैट हम लोग जब वहाँ पे चेकआउट करते हैं, नॉर्मली हम लोग जब एनालिसिस एंड ऑल दैट करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम लोग को ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. आई थिंक मे बी आप लोग जब नेक्स्ट इसमें जाओगे, आपका जो फाइनल सेमेस्टर है इसका यूओडब्ल्यू का, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू स्टडी द एरोडायनामिक पार्ट. सो एरोडायनामिक्स में हम लोग ये चीज़ को मतलब कंसिडर करते हैं कि आप लोग को ना बाय यूजिंग द फ्लुएंट एक रहेगा कि कार का एरोडायनामिक्स आपको स्टडी करना है. सो एट दैट टाइम द कार इज नथिंग बट योर सिस्टम, बिकॉज वॉट एवर द मतलब ऐसा प्रॉब्लम डेफिनेशन रहेगा, द कार इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, उसका जो भी स्पीड दिया हुआ रहेगा. ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरोडायनामिक इफेक्ट. तो एरोडायनामिक में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो जो भी हम लोग का जो एरिया है, मतलब जो भी हम लोग का कार है उसके ऊपर प्रेशर का जो भी इफेक्ट है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. एंड वेलोसिटी मतलब जो भी अपना जो भी विंड का वेलोसिटी या फिर जो भी एयर का वेलोसिटी है, तो हर एक व्हाट आई कैन से हर एक पोजीशन में वो वेलोसिटी एंड प्रेशर इफेक्ट क्या रहेगा. सो दैट वी हैव टू स्टडी. सो इन दैट वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. एक बड़ा ऐसा इनक्लोजर बनाते हैं हम लोग. ठीक है, एंड उसके अंदर वो कार को हम लोग रखेंगे, मतलब कार का एक मॉडल रहेगा एंड जिसके सराउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, पूरा इनक्लोजर क्रिएट करते हैं. सो दैट कार इज नथिंग बट द सिस्टम, बिकॉज हम लोग को क्या करना है, जो भी इफेक्ट ऑफ विंड है, ओके, जो भी इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो मुझे क्या करना है, कार पे स्टडी करना है. सो दैट कार इज नथिंग बट योर सिस्टम एंड वॉट एवर दैट एनक्लोजर. एनक्लोजर मतलब समझते हो ना कि साइड में जो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स नॉर्मली हम लोग कंसिडर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द एनक्लोजर. So enclosure is nothing but your surrounding. Okay, so we will going to study that thing. मतलब देखेंगे हम लोग तभी जब एरोडायनामिक्स का पार्ट आता है. बट द ओनली थिंग इज दैट कि मुझे वो डेफिनेशन आपको एक्चुअली बताना था. इफ यू वांट टू सी देन आई कैन शो यू एन एग्जांपल. जस्ट अ मिनट. Okay, will it be fine if I show you the examples?
Yes, sir. Okay, Yes, sir. just a minute. Huh? Okay, yes, yes. Somebody asked the question. It is like a wind tunnel test. Yes, actually, whenever we are considering the aerodynamics or whatever what we can call it as a CFD, so there are two options. The first one, that is your wind test, okay, wind tunnel, उसमें हम लोग create करते हैं. And the second thing, by using the software हम लोग उसको find out कर सकते हैं. So the same thing is there. So whatever the wind tunnel test you are talking about, that is a practical test. मतलब जहाँ पे हम लोग actual में like physical testing is there, and whatever I am going to show you, so that is a analytical part. So by using the softwares we are doing that. Okay, okay, can you see the things? Can you see the images? Yes, sir. Okay, now in Yes, this sir. thing, ये जो box दिख रहा है आपको side में, this is nothing but the surrounding. Okay, and ये जो car है बीच में, so that is nothing but your system. Okay, because this is under the consideration. So different, what I can say, the boundary conditions we are applying for that, and we could get the results like this. See, ओके, सो दिस इज द इफेक्ट. सो हम लोग को वो चेकआउट करना पड़ता है. सो दिस इज अ प्रेशर कंट्रोल. तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि कितना प्रेशर वहाँ पे एक्ट हो रहा है. सो इफ यू सी द कलर कॉम्बिनेशंस, तो उससे वो अंडरस्टैंड होने में इजियर हो जाता है कि कहाँ पे कितना प्रेशर है. ओके, ये देखो अलग अलग प्रेशर के हम लोग ने कंटूर्स फाइंड आउट किए. देन दिस इज इन वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी कैसे हो रहा है, स्ट्रीम लाइंस जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके, ये देखो. सो यहाँ पे कैसे वो डेविएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द व्हीकल. ओके, सो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट. बट वही मेरे को दिखाने दिखाने का रीजन यही था कि सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलरेडी वी आर डिफाइनिंग दोज ना. सो दैट्स व्हाई shown this thing. Hope so it is clear for you. Hello, is it clear guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Then the exchange between the system and the surrounding. Okay, uh, why we are going to discuss this thing, because depending on, there are different types of systems are there. Okay, so we will try to understand this thing, the exchange between the system and the surrounding, and then later on we will move on to the different types of the what I can say, the systems. Okay, now a useful classification of thermodynamic system, it is based on the nature of the boundary and the flow quantities through it as a matter, energy, work, heat and the entropy. मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. अभी जो भी बाउंड्री कंडीशंस हम लोग ने वहां पे देखा था कि बाउंड्री कंडीशंस क्या करता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट आउट करता है. अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बाउंड्री, आपने बाउंड्री कैसे वहां पे अप्लाई की है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो मैटर है, मतलब जो आपका मास, द एनर्जी, द वर्क, हीट एंड द एंट्रोपी, ये जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द बाउंड्री. इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग टू द सिस्टम. एंड जो हम लोग का जो क्लासिफिकेशन है, सिस्टम का क्लासिफिकेशन, इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग. ओके, सो एक एग्जांपल और एक दिया है यहाँ पे, मतलब सिस्टम का एग्जांपल क्या है वो, piston is an example of the system. Okay, then a fluid in the test tube, that is an example. मतलब वही जैसे मैंने तभी भी एक जो एग्जांपल अभी जस्ट बताया था, so that is again an example of the system. बट जो मेन क्लासिफिकेशन जो हम लोग को करना है सिस्टम्स का, that will be dependent on the boundaries
and these properties. Okay, so let's see what are the different kinds of the system. So there are three types of the system. The first is isolated system, the second is open type of system, and third is the closed type of system. Okay, now आप बोलोगे कि ये exactly है क्या, क्या isolated क्या है, open type of क्या है, and closed type of क्या है. Again it is completely dependent on the nature of the boundary. Okay, we'll try to understand. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, यो देन आपको ना समझेगा कि एग्जैक्टली मुझको मतलब व्हाट इज देयर एक्चुअली. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड. सो आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं these are completely isolated from in every way from their environment. Okay, मतलब क्या है कि एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलना, मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इट इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड. ओके, इन ए डिफरेंट इन ऑल द वेज. अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो भी सिस्टम में जो भी मास है एज वेल एज जो भी हीट है, ये दो ही क्वांटिटीज पे फिलहाल तो फोकस करो, वर्क पे फिलहाल फोकस मत करो. अगर हीट और अगर मैटर सिस्टम से एनवायरनमेंट में नहीं जा रहा है या फिर एनवायरनमेंट से अगर सिस्टम में नहीं आ रहा है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. या मतलब क्या होता है, अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो हम लोग का इंसुलेट अपना जो थर्मास रहता है, पता है चाय का. Yeah. ओके, Uh, क्या यूज है उसका, थर्मास क्यों यूज करते हैं हम लोग? हीट चाय To keep ठंडा the नहीं हो warm, उसके लिए. या चाय ठंडा ना हो. और व्हाट इज द सेकंड, इसका किसी का और अपनी ये था ओपिनियन. यस यस बिंदस, so, यू कैन टॉक. so same. To keep the या So that warm the tea. या एग्जैक्टली मतलब जो भी हम लोग ने जितना भी टेम्परेचर में उसको रखा है, मतलब हम लोग को चाय या फिर जो भी पानी रहेगा गर्म पानी वीकेंड से, तो उसको ठंडा नहीं होने देना. बिकॉज नॉर्मली अगर उसको हम लोग कैरी करते एट दैट टाइम क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाएगा बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ द हीट विल बी देयर. बट थर्मास में क्या हो जाता है, थर्मास में जब हम लोग उसको रखते हैं एट दैट टाइम मास तो ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आपने जितना पानी उसके अंदर या फिर जितना चाय वो थर्मास के अंदर भरा है, आप जितने टाइम पे जैसे भी बाद में आप 4 घंटे बाद ओपन करो, 2 घंटे बाद ओपन करो, मैटर तो उतना ही रहेगा. सो मतलब क्या है कि कोई भी मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है वहाँ पे. एज वेल एज जो भी टेम्परेचर है जितना हम लोग ने इनिशियल कंडीशन में रखा था, स्लाइटली कम होगा वहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली कि पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, बट स्टिल दैट इज अ माइनर चेंज. बट अगर हम लोग उसको निग्लेक्ट भी करते हैं so that you will get a same temperature after that. तो उसका मतलब क्या है कि heat is again not transferring. So that is nothing but an isolated system. Okay. So thermos is the best example of isolated system. तो सिंपल अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें आप सिंपली यही लैंग्वेज में बोलोगे कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या हो जाता है, जिसमें मास एंड हीट वोंट बी ट्रांसफर either from system to surrounding or from surrounding to the system. Clear है? yes. Okay, fine. Sir. Yeah. Yes, any doubt? Okay, fine. Then what is the closed type of system? Okay. Now closed system में यहाँ पे definition मतलब क्या दिया है, what is the concept? The closed systems are able to exchange the energy but not the matter. ओके, मतलब वही अगर इसको भी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करते तो इन क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, आपका हीट एक्सचेंज वहां पे होगा बट मास में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा. ओके, सो सिस्टम से सराउंडिंग में आप हीट ट्रांसफर कर सकते हो, मास ट्रांसफर नहीं कर सकते. जैसे अगर एक नॉर्मल बॉटल में या फिर नॉर्मल किसी इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर ग्लास में हम लोग पानी रख देते, तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, आपका जो हीट किया हुआ वाटर है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा. सो उसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो मास कुछ चेंज हो रहा है क्या वहाँ पे. जैसे एक ग्लास में आपने पानी रखा है, ठीक है,
वो उसमें क्या हो रहा है कि लाइक टेम्परेचर इफेक्ट आपको मिल रहा है, आफ्टर सर्टेन टाइम टेम्परेचर आपका ड्रॉप हो रहा है, बट आफ्टर सम टाइम मास में कुछ चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, मास विल बी एज इट इज, द ओनली चेंज इन द thing is what, the temperature. So that is called as a closed type of system. Okay, so close में remember only heat is transferred, not the mass. Okay, so the greenhouse is the example of closed system where the exchanging of heat will be there. Okay, but there is a no interchange between the mass or the matter, what I can say. Okay, and the third type of system is nothing but open type. अभी पहला सिस्टम था कि जिसमें हम लोग हीट एंड मास कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर रहे. सेकेंड टाइप में ऐसा था कि मास नहीं ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ओपन टाइप ऑफ सिस्टम में क्या रहेगा. सो ओपन टाइप ऑफ सिस्टम में इट विल बी एक्सचेंजिंग बोथ द थिंग्स, द मैटर एज वेल एज द हीट. ओके, मतलब जो भी हीट है वो भी ट्रांसफर हो सकता है, एंड आपका जो मैटर है दैट इज अगेन ट्रांसफरिंग. ओके, सो द बाउंड्री अलाउिंग द मैटर एक्सचेंज इज कॉल्ड द परमेएबल. ओके, सो जो भी बाउंड्रीज हम लोग अलाउ करते हैं जो भी ट्रांसफर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ परमेएबल. एक एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ओशन इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द ओपन सिस्टम. तो जहाँ पे आपका मैटर भी ट्रांसफर हो जाएगा एज वेल एज द हीट विल बी ट्रांसफर. इज इट क्लियर? Yes, Is sir. there any doubt in this? So we're talking about uh, like this ISO. The first one was isolated, right? Yeah, yeah. Yeah. So that you took an example of thermos bottle. So with the Hmm. time, the thermos bottle also get cools down. So don't you think that won't be a isolated system because after a sometimes there is some exchange of heat within the time. Huh, it will be there actually. So would it be a isolated system or would come under the open or the second one It won't be system. open because mass transfer तो directly नहीं होगा. Okay, so Yeah, it Mark. will, yeah, it will be comes under the close we can say. Actually इसके लिए मैंने Hmm. वही तभी mention किया था कि थर्मास में भी again after some time हो जाता है ऐसा, but again it is Yeah, depending on the materials. कुछ material. materials Okay. ऐसे रहते हैं ना कि मतलब आप एक रहता है ऐसा कि कुछ materials में it won't be exchanging the things. अगर आप बहुत टाइम तक भी रखते हो ना उसको, so that is again Okay. सेम ही रहता है. ओके, बट नॉर्मली Okay. जैसे यहाँ पे अगर देते हैं तो कुछ इंसुलेटेड कंटेनर्स, तो मतलब गैस सिलेंडर्स एंड ऑल दैट ऐसा रहता है ना, so that you can Yes. consider as a isolated system. Isolate. Okay. Yeah, Okay. बट मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का जो जनरल कॉन्सेप्ट है, सो दैट कॉन्सेप्ट इज द सेम थिंग कि लाइक हीट एंड मास कुछ भी ट्रांसफर नहीं है. कुछ इसमें रहता है, मतलब कुछ थर्मास में बहुत टाइम तक रहता है, कुछ में नहीं रहता है. सो दैट इज अगेन द कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल्स कि क्या Okay. प्रॉपर्टीज है मटेरियल के. ऐसा है तो अगर कंडक्टिविटी अगर मटेरियल का है वहाँ पे थोड़ा सा भी ज्यादा, Hmm. या फिर कुछ इम्प्योरिटीज अगर है, इन दैट केस हीट नहीं विथस्टैंड करेगा, वो पूरा जाएगा. Okay. ओके, ओके फाइन. सो इज देयर एनी डाउट विद द system, all the type of systems? Okay, Can so you please show the slide for closed systems once? yeah, sure. Yes, sir, done. Okay. Okay, is there any doubt in this? No, sir. No, sir, I was taking notes, so I did Okay, okay, not okay. got the last Okay, I'll share you the notes for this. No issue. Okay, sir. Thank you. Okay, I have a chapter wise notes for that. Okay, so in that it is explained in very simple way. मतलब जो भी नोट, मतलब बुक्स तो इसके ऊपर है डिपेंडेंट, बट बुक्स में कैसे है पता है, थोड़ा लैंग्वेज इज लिटिल बिट टफ. ओके,
एंड समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी जाता है. सो आई हैव द नोट्स, तो अलग अलग चैप्टर वाइज है. सो जैसे जैसे हम लोग का प्रोसीड होते जाएगा आगे, वैसे वैसे मैं आपको वहाँ पे वो लाइक देते जाऊँगा. आई थिंक वी हैव अ examination for this, I think, no? Yes, sir. Okay, have you gone through the syllabus and all that? No, sir. I'll show you. One minute. I have the syllabus actually. Okay, is it visible? Yes, sir. Yeah. Okay, so have you gone through the syllabus? No? Not yet, sir. Okay, okay, Sir. fine. So actually this is the content that we are going to study. So the first thing is that thermodynamic system. So right now whatever we are learning in this thing, so it is completely depending on that. So systems, so different types of systems, the first law, second law, the applications and all that, depending on all the expressions and all. So that we are going to study in that. The second thing, what is nothing, that is nothing but the second laws of thermodynamics. So statements क्या है, कैसे representation है, and what are the different applications. तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला था, different engine cycles are there. Okay, then some refrigeration cycles are there, engine design is there. So everything we are going to learn in this thing. And the steam and the gas turbine, so again वहाँ पे भी डिफरेंट साइकिल्स पे हम लोग वर्किंग करते हैं. तो स्टीम एंड गैस टर्बाइन का भी हम लोग वहाँ पे इफेक्ट हम लोग चेक मतलब देखने वाले हैं पूरा स्टडी में. सो दिस इज ओवरऑल द सिलेबस एक्चुअली, कंटेंट है आपका. एंड असेसमेंट है आपका 50%. yes, coursework is there for 50%. Examination is there. Okay, fine. ठीक है, the examination will be there for 50%. So the notes will be beneficial for you. I'll share, no issue. Okay, then the next thing is nothing but the properties of the system. So what are the different properties of the system, so that we need to understand. Okay, now any characteristics of the system is called as a properties. So whatever the characteristics that the system is showing, that is nothing but the properties. Okay, normally जैसे हम लोग ने बोला था कि properties normally क्या है. So the first is nothing but is your pressure, the temperature, the volume and the mass. Okay, so these are the major properties actually that we are going to study: the pressure, the temperature, the volume and the mass that we can consider. Okay, apart from that you can add the viscosity, the thermal conductivity, okay, the modulus of elasticity and the thermal expansion. These are additional parameters, but कोई भी system के बारे में जब हम लोग को basically जब बताना है, at that time we are focusing on the first four, that is pressure, PTV and mass. Okay, so that's why हम लोग का वो जो एक ideal gas equation है, PV is equal to MRT. Okay, so वही equation हम लोग बहुत कभी ये equation study किया है तुम लोग ने? Hello. Yes, sir. Yeah, Not yet. not yet. No, Okay. sir. Yeah. So those who have completed 11th and 12th, and they know the equation, because there was a
chapter called as the kinetic theory of gases. So in that we are going to already we have studied the equation. That is the ideal gas equation. The equation is PV is equal to MRT, where P is nothing but your pressure, V is nothing but your volume, M is nothing but the mass, R is nothing but it is a gas constant, and T is nothing but the temperature. Okay, so ये इक्वेशन हर जगह पे यूज होता है एंड उसके ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसा है. तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, pressure and mass it is again directly proportional, pressure and volume that is inversely proportional. So वही रिलेशन शो करता है. तो जब भी आप कोई भी सिस्टम, जब कोई भी एप्लीकेशन कंसिडर करते हो, नॉर्मली जब हम लोग CFD एनालिसिस करते हैं, राइट नाउ वी आर डूइंग दैट थिंग. सो in that CFD analysis we have to focus on this equation. Okay, so in that again you will see all this equation, the pressure, the temperature, the volume and the mass, right? So that is the expression. So these are the main properties. Apart from that, the viscosity is there. Viscosity means what? The thickness of the fluid I can say, or what I can say, the stickiness of the fluid. तो जितना ज़्यादा स्टिकी रहेगा विस्कोसिटी, मतलब जो भी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा, जो फ्लूइड जितना ज़्यादा फ्लो हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी लेस. मतलब इंटरनली क्या होता है, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन रहता है विस्कोसिटी में. द थर्मल कंडक्टिविटी, जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रहेगा उतना लाइक हीट कैन बी ट्रांसफर फॉर दैट. Okay, and modulus of elasticity, there are different modulus of elasticity that we need to understand for that, and as well as the thermal expansion, like जो भी हम लोग heating करते हैं at that time length में changes हो जाता है. So that is called as the thermal expansion. So for that we need to understand the concept of that कोएफिशिएंट रहता है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा करके रहता है. सो दैट इज एन अगेन अ डिफरेंट प्रॉपर्टी फॉर दैट. ओके, सो दिस प्रॉपर्टीज वी नीड टू स्टडी. नाउ एक्चुअली जो भी प्रॉपर्टीज की बात हम लोग कर रहे हैं, जितना भी अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी and the second one is the extensive property. Now we'll try to understand what is the meaning of intensive and what is the meaning of extensive property. Now intensive property means what? It is the independent of the amount of the mass. मतलब ये जो intensive properties जो भी है, मतलब इसके अंदर जितने भी properties है, those are independent on the mass. तो mass कितना भी रहने दो, 100 ग्राम रहने दो या फिर 1 kg रहने दो, ये properties पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, right? So कौन से ऐसे properties है? The first one that is nothing but your temperature. तो वो इक्वेशन में देखो ना, इक्वेशन में ऐसा था कि एम आर टी, R is the constant and M and T are on the both sides, so it is independent on that, right? So temperature कुछ फर्क नहीं पड़ता है मास पे, मास की वजह से. The viscosity again it is a independent property. ठीक है, density is there, electrical resistivity is there, melting point, boiling point, color. So these are nothing but the intensive properties. तो अगर आपको कोई पूछता है कि what is the meaning of intensive property, तो आप सीधा वहाँ पे directly बोलोगे कि it is independent on the mass that is present inside the system. Clear? Then Yes, the sir. okay. Then the Yes, sir. second thing is nothing but the extensive. अभी intensive क्या बोलते हैं? It is independent on the mass. So what should be the meaning of extensive property? It will be dependent on the mass. So extensive property is the property that changes when the size of the sample change. मतलब क्या हो जाता है, जैसे क्या बोल सकते हैं, मास चेंज हो रहा है या फिर क्वांटिटी चेंज हो रहा है या फिर जो मैटर वहाँ पे चेंज हो रहा है या फिर साइज जब भी चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, all the properties will be changes. So extensive properties का examples क्या क्या है? The mass is an example, obviously mass related. Volume is dependent on the is an extensive property. Entropy, energy, electric resistance and the texture, these are nothing but the extensive properties. So is it clear? The intensive property independent on the mass, extensive property it is the dependent on the. Clear? Sir. Yes.
बोल बोल. Clear, clear. हाँ. Okay, fine. Okay, fine. So ठीक है, हम लोग स्टेट के बारे Don't में. you think या intensive property में temperature, yeah, keep this slide. So don't you think intensive property में temperature won't come, because I think if the mass increases or decreases, the temperature varies with the respect to mass. Don't you think so, sir? Because if the mass increases, the temperature takes time to increase the temperature. That's what I think. And if the mass of the object is very less, the temperature increases very rapidly. Is it so? no, Okay. actually that is dependent on the conductivity, not the mass actually. Whatever you are talking now, that is dependent Uh, on the conductivity. जो मैंने बोला एक प्रॉपर्टी करके, तो जितना कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा ना, तो उस टाइम पे इट विल टेक डिफरेंट टाइम. तो जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ कि कोई भी दो चीज़ें कंसिडर करो, एक कोई भी मेटल ले लो, जैसे कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट. ओके, तो mm-hmm, कॉपर का भी सेम अमाउंट आप ले लो. ओके, एंड ऑन द अदर साइड कुछ और आप कंसिडर कर सकते हो, एनी ऑफ द मटेरियल विच इज हैविंग अ लेस Aluminium. कंडक्टिविटी. Uh, Aluminum is again good okay, property. no, Yeah. ज़्यादा है, हाँ, yeah. uh, Mm, you can consider any of the thing like अलग से जिसमें कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम है. एंड अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ अगर हीट देते हैं, अभी क्वांटिटी तो उतना ही है, जैसे अगर इसका 1 kg है और यहाँ पे भी 1 kg है, बट जो हीटिंग का टाइम है ना वो डिफरेंट है. तो जैसे फर्स्ट के लिए कितना रहेगा, सपोज 2 मिनट का टाइम है, सपोज 1 kg हीट होने के लिए कॉपर में 2 मिनट लगता है, वही सेकेंड में 5 मिनट लगेगा. मास तो सेम है ना, बट जो तुम टाइम की बात जो कर रहे हो ना, वो वैरी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी. टेम्परेचर विल बी सेम. ओके ना, टाइम वो अलग रहेगा बस. एंड एक्चुअली यहाँ पे कैसा पता है, वी आर फोकसिंग ऑन द कंडीशंस. एक्चुअली स्टैटिक हम लोग देखेंगे, इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट एक्चुअली. क्लियर. okay, okay. Yeah, yeah. या समवन हैज रेज द हैंड, ऐसे ही उठाया हाथ कि क्या रे. सब ऑप्शंस एक एक चेक कर रहे कि क्या है क्या नहीं है करके. Okay, fine. So, is it clear? Yes, sir. Okay, fine. So, is there any doubt in this? So, आज के लिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे ही स्टॉप कर लेते हैं on the properties. Okay, sir. From the tomorrow है ना? हाँ सर. Yes. Yeah, okay. So, tomorrow we'll start with the new thing. So, that is the states and all that. And depending on that सारे laws and all that हम लोग देखते हैं क्या क्या है, different phases and all that. सो वो पूरा हम लोग देखते हैं. तो पहले थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट ही है, तो थोड़ा हम लोग वो देख लेते हैं. देन बाद में जो भी उसके ऊपर जो भी एग्जांपल्स एंड ऑल दैट है, न्यूमेरिकल्स वगैरह है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे. फाइन. Okay, sir. ओके फाइन. सो इज देयर एनी डाउट इन दिस सो फार? समझ में आ रहा No, है? sir. No. Yes sir. Yes, या sir. हाँ. Yes, sir. नींद नहीं आ रही है ना, सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है इसके No लिए. sir. नहीं सर. ठीक है, बिकॉज एक्चुअली दिस इज अ कन्वीनियंट टाइम, थोड़ा सुबह सुबह अच्छा भी रहता है. तो उसके बाद में एक्चुअली मेरे पास भी थोड़ा नहीं रहता है टाइम, सो इट्स बेटर कि एक संडे में ही पूरा एक साथ पूरा बम्बार्डिंग करने से अच्छा है कि डेली अगर होता है तो बेटर है. So for this week only we will have a 1 hour session and later on we will start with the 2 hour sessions. So वो बेटर पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा. ठीक है. एंड वट एवर द नोट्स एंड ऑल दैट है, तो मैं वो आपको डायरेक्टली वो ग्रुप में ही वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ. Sir, also if possible, share that PDF now, that subject wala. विच वन? The one you showed, like the
learning outcomes and stuff. Okay, syllabus. It's Okay, there. Module, Shagun, syllabus. Okay, okay. Shagun, it is there in our group. Okay, you send again in the group if possible. I am not having. Okay. Okay. yeah, इधर okay, लोग करने वाले हो क्या? ठीक है, एक बार चेक कर लो, अगर है हाँ सर किसी के रहेगा पास तो मंडे yeah, के बाद they सारी can. टेक Okay, yeah, they can share. If they don't have, then you can ask me. I can share the हाँ thing. yeah. Okay. Okay, fine. So I had a doubt, sir. Yeah, sure. So, like, this subject will be having assignments or like this exam, Both the things are there. The written course, exam, sir. yeah, coursework is again there, as well as the examination is again there. 50-50 is there. 50-50%. Okay, thank you, sir. Yeah, fine then. So I have recorded the session. So in case अगर किसी का miss हो गया, we'll try to record each and every session. So जैसे अगर किसी का miss हो जाता है, in that case again I'll share that thing. तो WhatsApp पे Okay, थोड़ा sir. difficult है. So what I'll do, I'll upload it on the drive and I'll share you the drive link. I'll share the drive link with you. Okay, so that अगर आपको कभी refer करना है, at that time you can refer it. Fine. Yes, sir. Okay. Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो then fine. I'll meet tomorrow the same time. All right. Yeah.